अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्षातं सागणरघुनाथान्वितं सतीं सावधूतं देवं आदान सागणपिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेष्टा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानंद माधवं कृष्ण चैतन्य ईश्वरं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। Hare Krishna everyone. Dandavat pranam. Jai Shri Prabhupada. Thank you for joining. Please accept my humble obeisances. So wishing everyone a very, very auspicious, Krishna conscious, wonderful New Year. Happy New Year 2023. So give me 1 second. So I thought today we'll discuss something a little different and something that will be hopefully very beneficial to everybody. No matter whatever situation you are, whether you are a child, a grown-up, older person, in a profession, or a housewife, or in transition between different things, whatever you're doing, a student, anything that you're doing, I'm hoping this topic will help you. And I'm not anybody to give any instructions, so I'm just going to share some stories and some examples from this world, and a beautiful story from Bhagavatam actually, which is very, very big eye opener. So please pray for me that I'm able to present this and we are able to implement what we learned this year and make this year very, very auspicious, materially beneficial, and spiritually we advance in this year. So the topic that I chose for today is to talk about one of the energies of Krishna. Okay, we always talk about Maya Devi, right? We always talk about how Maya Devi is so strong, how she's the inferior energy of the Lord, how she can influence us, how she can obstruct our path to Krishna and whatnot. But so we always bash Maya quite a bit, right? But let's talk about a different type of energy of Krishna today that I think we don't talk about enough. And that energy is called time. So I chose the topic time today to discuss, which is a very wonderful energy of Krishna and very, very difficult to understand, right? We do everything according to the clock. Like अभी भी क्लास ज्वाइन की है तो 9 बजे क्लास है तो 9 बजे ज्वाइन करनी है, राइट? 10:30 बजे खत्म होनी है, उसके बाद क्या करना है? दिन में 24 घंटे हैं, कैसे उसको यूज करना है? आज सैटरडे है, आज संडे है, तो उसको कैसे, उस वीकेंड पे क्या करना है? कल से मंडे है, तो बहुत कुछ टाइम के हिसाब से होता है। तो उस टाइम का क्या
क्या रेलेवेंस है? ठीक है, टाइम है, घड़ी है, कैलेंडर है, अभी सबने कैलेंडर बनाया इतना अच्छा, कृष्णा कॉन्शियस कैलेंडर, लेकिन उस टाइम की कैसे वो एनर्जी है कृष्णा की, और उसकी क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो हमें समझ नहीं आती, जो भागवतम बताती है, भगवत गीता बताती है. आई वांटेड टू टॉक अबाउट दैट. I'm going to talk mostly in Hindi because I see most of the people can understand Hindi here. And I have a little slideshow and PowerPoint to share so that we keep everybody engaged. And let's hope like it. So, okay. You can all see my screen, right? Okay. Okay, well, let's start. So since this has some stories, one story from Bhagavatam, let me just say quick invocation prayers from Srimad Bhagavatam, and then we'll start. Please chant after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo ॐ ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiriyet Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavati Uttama Loke Tirbhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nanda देवकी नंदनाय च। Maraya Govindaya Namo Namah. नमो नमः। Hari Bol. So this famous line of Krishna, when he says time I am, we'll go over this verse also. He says Kalo Asmi, right? So this is the very famous line, a phrase that I decided to use as the topic of my presentation, because we should understand time as we understand Lord. We are always trying to understand Lord, but time is an energy of the Lord that we need to understand, right? महाभारत की सबसे शुरू की लाइन में वो बोलता था ना, मैं समय हूँ. सबको याद होगा जिन्होंने महाभारत देखी है, मैं समय हूँ. इतने इंपॉर्टेंट क्यों है ये बोलना कि मैं समय हूँ? क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये समझना कि समय की गति क्या है, वो किस पेस पे चल रहा है, उसकी स्पीड क्या है, और कितना समय है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. So let's dive into this. And especially I thought this was important because New Year is starting. And New Year में सब लोग resolutions लेते हैं, सब लोग नई नई चीजें decide करते हैं कि इस साल मैं ये करूंगा, वो करूंगा. थोड़ा बहुत करते हैं शुरू में, फिर कुछ खास ज्यादा नहीं होता, फिर बाकी का साल वैसे ही हो जाता है, फिर वो साल ओल्ड हो जाता है, फिर नया साल आता है. ऐसे करके जिंदगी चलती रहती है, राइट? एक साल के बाद दूसरा साल आते रहता है, और ज्यादा कुछ नया होता नहीं है. सो न्यू ईयर चेंज होते रहेगा, कैलेंडर चेंज होता रहेगा, हर साल नया कैलेंडर बनता रहेगा, लेकिन हमने उस साल में क्या किया, इतना कुछ कॉन्क्रीट, कुछ टैंजिबल, कुछ बेनिफिशियल, कुछ ऐसा जो हमारे लिए और दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल था, है ना? ऐसा कभी कुछ खास हो नहीं पाता ज्यादा. सो आई वांट कि दिस ईयर ऐसा कर पाए हम कि हमारे लिए भी कुछ बेनिफिशियल कर पाए, दूसरों के लिए भी कुछ कर पाए, कुछ टैंजिबल, कुछ कॉन्क्रीट अचीव कर पाए, नॉट जस्ट सपने, नॉट जस्ट ड्रीम, राइट? जैसे कि आप सब लोग मोस्ट ऑफ यू काम करते हो आप लोग, तो आपके भी आपके ऑफिस में या आपके स्कूल में कोई रिपोर्ट कार्ड वगैरह जनरेट होता है, राइट? एवरीबडी गेट सम काइंड ऑफ इवैल्यूएशन होती है 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, या कोई अप्रेजल होता है, राइट? कि किसने कितना काम किया, कितना बोनस मिला, कितने क्लाइंट्स बनाए, कितनी छुट्टी ली, कितना इनकम जनरेट की हमारी कंपनी के लिए, ऐसे. या फिर स्कूल में भी इवैल्यूएशन होती है, इसके कितने ग्रेड्स आए, कितनी बार स्कूल में लेट आए, कितने सिक डेज लिए, ऐसे करके इवैल्यूएशन होती है हर किसी की. अग्री, राइट? तो हमको दिस इज व्हाट आई वांट एवरीबॉडी टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट. साल के अंत में और अगले साल के शुरू में, अभी जैसे साल शुरू हो रहा है, क्यों ना हम अपने जिंदगी का, अपने पिछले साल का भी अप्रेजल करें, देखें कि हमने क्या किया पिछले साल में, क्या हमारी कुछ स्पिरिचुअल लाइफ में प्रगति हुई, कुछ एडवांसमेंट हुई. हम इतनी माला करते थे, अब हम इतनी माला करते हैं, पहले हम 4 करते थे, अब हम 8 करते हैं, राइट?
हम पहले ये नहीं करते थे, अब हम ये करते हैं, पहले मैं एकादशी नहीं रखती थी, अब मैं रखती हूँ, पहले मैं ये खाती थी, अब मैं नहीं खाती, या कुछ उल्टा हो गया, रिवर्स में चला गया, ऐसा हुआ क्या कि मैं पहले कुछ अच्छा करती थी, मैंने वो करना छोड़ दिया, या फिर मैंने कोई बुरी संगति उठा ली क्या, या फिर मैंने कोई गलत आदत लगा ली क्या, या कोई नया अनर्था डेवलप हो गया, या कोई अनर्था गिव अप कर दिया, राइट? ऐसे ऐसी ही कोई इवैल्यूएशन, कोई अप्रेजल अपनी लाइफ की भी हमको हर साल करनी चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे, राइट? वी टॉक्ड अबाउट दिस, वी हैव टू ग्रो थ्रू लाइफ, वी डोंट जस्ट गो थ्रू लाइफ, राइट? वी हैव टू इवॉल्व थ्रू लाइफ। जैसे हम अपनी सीवी अपडेट करते हैं, उसमें हम नई नई चीजें डालते हैं, तो हमने मटेरियल लाइफ में क्या किया, स्पिरिचुअल लाइफ में क्या किया। मटेरियली मेरे ये गोल्स थे, मैं अपने प्रोफेशन में ही करना चाहता था पिछले साल, क्या मैंने किया वो पिछले साल? क्या मैंने किसी का कुछ भला किया? क्या मैंने किसी का, अपने परिवार वालों का या कम्युनिटी का या फ्रेंड्स का, किसी को कुछ अच्छी गाइडेंस दी, अच्छी शिक्षा दी, उसकी वजह से वो करने लगा? ऐसे करके पूरा अप्रेजल क्यों नहीं लेते हम अपना, पूरा स्टॉक क्यों नहीं रखते अपना, एक बैलेंस शीट, एक रिपोर्ट क्यों नहीं बनाते अपनी लाइफ की, ताकि हम उससे आगे आगे बढ़ सकें, ताकि हम एक इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। एंड दिस क्वालिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, दिस इज फॉर दोज पीपल दैट आर in mode of goodness, that are not just rajoguni and tamoguni. If you are in mode of goodness, if you're on a spiritual path, this is a very important quality to have. So maintain a log. और जब लाइफ का एंड आएगा तो देखें कि हम कितना, पहले हम कैसे थे और हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, right? So that is one of the things I wanted to mention as an introduction to this presentation. Now, who can tell me what are the 5 main topics of Bhagavad Gita? Because let's start from Bhagavad Gita before we go into Bhagavatam. What are the 5 key topics of Bhagavad Gita? We often talk about these. आप लोग Bhagavad Gita almost finish करने वाले हो, 17 chapter पे आ गए हो। 5 जो main themes हैं Bhagavad Gita की, वो क्या हैं? एक एक करके different people can answer, I'm sure. Who will start? Then if not, I'll have to pick up people. Anita Mataji, would you like to mention the 5 main topics of Bhagavad Gita and one of them? Yes, Hare Krishna Mata ji. Yes, actually मैं raise hand करने की कोशिश कर रही थी online and it was not happening. So you got me at the right time. Yes, so who am I? And other 4s are like who is God, like who is Paramatma? Karma, what is karma? Let's see, और कोई और आंसर करेगा माता जी अभी? तो आपने 3 बताया, अभी 2 किसी और से पूछते हैं, because रवि प्रभु is also raised hand. So who am I मतलब जीवा कौन है, फिर आपने बोला भगवान कौन है, और फिर आपने बोला कि तीसरा कर्मा। तो ये 3 बहुत अच्छे माता जी ने बताया। Okay, let's see. I see Ravi Prabhu, please answer the rest of the 2. Hare Krishna. The 4th one is what is time? That talks about in Bhagavad Gita. And the fifth one is, I think, how do we connect to the Krishna, to the God? The way of connection, I think. 5th one is, let's see if anybody else wants to answer. Time you got right, Prabhuji. The connection you're talking about is yoga, which karma is the main one mentioned. So that's there. 5th one, anybody else can mention? So 5th is Prakriti or material nature, right? So Jiva, Bhagwan, Prakriti or material nature, karma, and time, right? So I thought we'll take one of these main topics and start with the time. So let's talk about this. So these are the 5 key topics of Bhagavad Gita. इसी तरीके से भागवतम भी topics में divided है, उसके 10 topics होते हैं। तो ये है ईश्वर, इसके भगवद गीता के 5 main topics हैं, themes हैं। कर्मा मतलब activities, ईश्वरा या भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, जीवा जो लिविंग एंटिटी है, मटेरियल नेचर या प्रकृति, और काल या टाइम। सो विल टॉक अबाउट टाइम, ओके? और मैं आपको कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं बताऊंगी कि क्या आपको करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत चीजें पता है ना। आई कैन शेयर सम टॉक्स, एक्चुअली देयर आर वेरी नाइस टॉक्स बाय राधेश्याम प्रभु ऑन टाइम मैनेजमेंट, बाय अमोघलीला प्रभु, बहुत सारे टॉक्स हैं। तो आप वो देख सकते हैं कि कैसे हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कैसे हमको अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ सिद्धांत बताऊंगी, तत्व बताऊंगी काल का। जैसे आपको बाकी सब चीजों का तत्व एक्चुअली बहुत अच्छे से पता है, आपको पता है कि जीवा जो है वो उसका तत्व क्या है, वो सुपीरियर एनर्जी ऑफ लॉर्ड है।
जो भगवान है वो भगवत तत्व है, राइट? वो इन्फिनाइट है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो अनलिमिटेड है, वो ओशन है, और जीवा जो है वो एक ड्रॉप है, राइट? तो ऐसे तत्व आपको पता है जीवा और भगवान का। कर्मा का नेचर ऑफ कर्मा आपको पता है, लॉज ऑफ कर्मा आपको पता है कि कैसे हम जो करते हैं वो हमको वापस मिलता है, चाहे वो पायस हो चाहे वो सिंफुल एक्ट हो, दोनों वापस मिलते हैं। और हमें अकर्मा करना चाहिए, मतलब कृष्णा कॉन्शियस या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। प्रकृति के बारे में भी आपको पता है कि 3 गुण होते हैं प्रकृति के, जिनसे वो हमको बांध के रखती है और अपने पॉपेट की तरह चलाती है, और हम सोचने लगते हैं कि हम भी प्रकृति की तरह इंफीरियर हैं। हम उसके साथ अपनी बॉडी जो प्रकृति का पार्ट है उससे आइडेंटिफाई करने लगते हैं। तो ये 4 तत्व तो आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन काल का तत्व हमने कभी डिस्कस नहीं किया। काल का क्या सब्सटेंस है, काल का क्या स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं, वो हमने डिस्कस नहीं की। तो आज हम 5 क्वालिटीज काल की डिस्कस करेंगे। और I will take this story from Srimad Bhagavatam, actually comes in first canto, and some of you may have already read it, जिन्होंने पढ़ा है ये part. So let's start. This story, just to tell you the backstory of this, this conversation is between Dhritarashtra and Vidura. Okay. Now you know that जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो क्या विदुरा उस टाइम वहीं पर थे? वॉर के टाइम पर कहाँ पर थे विदुरा? कोई बता सकता है? विदुरा ने क्या वॉर में पार्टिसिपेट किया था? क्या लड़े थे वो, या वो धृतराष्ट्र के साथ बैठे थे, या क्या हुआ था उनका? He was Hare Krishna Mata. He was with Dhritarashtra. He was his. He could see. He had I think, the blessing of seeing, so he could narrate the whole what was going on in the war field. So Mataji, you're confusing with Sanjay. That's Sanjay. Sanjay was the charioteer of Dhritarashtra, right? Vidura, if you remember, so just going further back, Vidura is actually one of the brothers of Dhritarashtra and Pandu. 3 भाई थे, right? वेद व्यास से 3 पुत्र हुए थे। 2 पुत्र तो थे जो अंबिका और अंबालिका, उनसे हुए थे, right? Which was Pandu and Dhritarashtra. दोनों की कुछ ना कुछ physical problems थी, right? Pandu was physically weak and had left his body after a curse. और धृतराष्ट्र जो थे वो ब्लाइंड थे, वो ब्लाइंड पैदा हुए थे, इसलिए he was not considered fit to rule and Pandu was, even though धृतराष्ट्र was older brother, पांडु को किंगडम दिया गया था। लेकिन जो तीसरे पुत्र थे जो वेद व्यास से ही हुए थे, वो दासी पुत्र थे, और वो बिल्कुल फिट थे, बिल्कुल परफेक्ट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत स्पिरिचुअली एलिवेटेड थे, लेकिन वो किंगडम नहीं हासिल कर सकते थे क्योंकि वो दासी पुत्र थे, तो उनका कोई क्लेम नहीं था टू द थ्रोन। सो वो थे विदुरा। तो विदुरा जो है वो धृतराष्ट्र और पांडु के भाई हैं। तो जिनको आप समझ रहे हैं वो संजय हैं, जिनको सब दिव्य दृष्टि दी थी वेद व्यास ने, एंड ही कुड सी एवरीथिंग हैपनिंग ऑन द फील्ड ऑफ वॉर। लेकिन विदुरा कहाँ थे? विदुरा जो उनके भाई हैं, बहुत वेलविशर हैं, फ्रेंड थे, सारी लाइफ धृतराष्ट्र को उन्होंने अच्छा गाइड किया, अच्छा काउंसिल किया। वो बात अलग है, धृतराष्ट्र कभी उनकी सुनते नहीं थे, क्योंकि धृतराष्ट्र वाज physically blind, but also he was spiritually very, very blind as well, and could not see. Even though he knew the dharma, he could not apply the dharma. So विदुरा को धर्म का ज्ञान भी था और उसको अप्लाई भी करते थे। विदुरा उनके बहुत अच्छे वेल विशर, एडवाइजर, काउंसलर थे, और बहुत क्लोज एसोसिएट थे धृतराष्ट्र के। उनको हर कदम पे गाइड करते थे, लेकिन धृतराष्ट्र उनकी बात अनसुनी कर देते थे। तो ये विदुरा जो उनके भाई हैं, उनके फ्रेंड हैं, उनके कॉन्फिडेंट हैं, ये कहाँ थे महाभारत के टाइम पे? ये आई थिंक रवि प्रभु रेज्ड हैंड, but I want good participation from everybody, so I want to hear from different people. So people that have not answered, I may have to start picking, and wrong answer is also okay, but let's see who can answer. विदुरा कहाँ चले गए थे उस टाइम? Navya raised hand. Okay, Navya, you can share. The Drashta had been mean to Vidura, so he left because he didn't want to take sides, because it wouldn't be fair to take the Pandavas side, and he thought himself too fallen to go to Krishna. Very bold, very nice. So where did he go?
He left, you said, but where did he go? Mm, Okay. So he went on a pilgrimage, right? So basically, not Dhritarashtra, but Duryodhan had insulted Vidura and thrown him out of the kingdom. बहुत ये भी भागवतम में आता है कि क्या क्या इंसल्ट किया था, क्या क्या बोला था कि ये जो दासी पुत्र है ये हमको गलत गाइड करता है और ये छुपकर पांडवों की साइड पे है, तो इसको निकाल दो, इसको इसी क्षण निकाल दो, जैसे कि किसी डिजीज्ड ऑर्गन को काट के फेंक देते हैं, ऐसे इसको भी निकाल दो. Like that he had said many. You read that verse, is very ferocious, disgusting things he has said to Vidura, who was his uncle basically. So that was Duryodhan. उन्होंने उनको निकाल दिया था. So Vidura was completely detached. He went on a pilgrimage. There, so this also comes in third canto of Srimad Bhagavatam. Vidura met a great devotee, pure devotee of the Lord, and very close confidential associate of the Lord. His name was Sri Uddhav ji, right? He went Sri Uddhav. And Uddhav told him, you know, he asked knowledge from Uddhav, but Uddhav said, go to Maitreya Rishi. And so Vidura went to Maitreya Rishi and got all the transcendental knowledge. Actually, Maitreya Rishi happened to be at the same time, at the same place where when Krishna was leaving his body. So Vidura got all this knowledge from Maitreya Rishi about the pastimes and glories of the Lord. Now Vidura, after many years, comes back to Hastinapur. And he comes back for one reason, for helping Dhritarashtra. He comes back to take Dhritarashtra away with him. He comes back to break the detachments of Dhritarashtra. So we will read this conversation that will happen between Vidura and Dhritarashtra and learn the qualities of time, because Vidura will tell those qualities to Dhritarashtra. So let's read about it. So this verse, I will not read each and every verse because we don't have time. We'll just read the translation. This is just the verse I wanted to include because it is such a very beautiful verse that when Vidura came back to Hastinapur, तो युधिष्ठिर महाराज ने उनका बहुत स्वागत किया, उनको बहुत prayers offer की, और उन्होंने बोला कि आप वापस आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम तीर्थ स्थान पहुंच गए हों, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं, बड़े sages होते हैं, बहुत महात्मा लोग होते हैं, they carry pilgrimages within their heart. So he said, "Oh my Lord, devotees like your good self are verily holy places personified. Tirthi kurvanti tirthani." This is a memory verse. Anybody wants to memorize? Tirthi kurvanti tirthani swanta sthena gadabhrita. That because you carry the personality of Godhead within your heart, you turn all the places into places of pilgrimage. So he said, युधिष्ठिर महाराज ने उनका बहुत वेलकम किया. और जब सब ऑब्लिगेशंस खत्म हो गई तो फिर उन्होंने कहा मुझे अब धृतराष्ट्र से मिलना है. So I wanted to include something about this Tirthi Kurvanti Tirthani in the presentation. कि एक और बहुत हमारे महापुरुष जिन्होंने who is a pilgrimage personified, कि जो जहाँ जाते हैं वो उस जगह को तीर्थ स्थल बना देते हैं. So I wanted to share this picture with you. This is the picture of Prabhupada in Tompkins Square Park in New York. This is a very famous tree. इस tree के नीचे प्रभुपाद बैठ के कीर्तन करते थे. एवरी डे जाते थे और वहां पे जाके कीर्तन करते थे. पहले अकेले करते थे और धीरे धीरे उनके साथ कितने सारे लोग एसोसिएट होते गए, बिकॉज दे वर अट्रैक्टेड टू द ट्रांसेंडेंटल साउंड्स ऑफ द Prabhupada's Mahamantra. And so that tree is now celebrated as a pilgrimage by the devotees. वहां पे ऐसे साइन लगाए, it is called Hare Krishna tree in the Tompkins Square Park. And सभी devotees जाते हैं तो flowers वगैरह डालते हैं. तो this shows the power कि जब कोई great devotee आपके पास आए, प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, हाँ, तो वो तीर्थ स्थल से कम नहीं है, वो आपको शुद्ध कर सकता है. तो न्यूयॉर्क जैसी कंटामिनेटेड जगह को भी प्रभुपाद ने ऐसे शुद्ध कर दिया था अपनी ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन से. इसी तरीके से विदुरा भी आए हस्तिनापुर धृतराष्ट्र को शुद्ध करने, कि ये धृतराष्ट्र जो है ये क्या कर रहा है, ये पांडवों के साथ रह रहा है. पांडवास हैव, भीमा हैज किल्ड ऑल हिज सन्स. उनके सारे 100 सन्स को भीमा ने मार दिया और ये उन्हीं के साथ रह रहा है. So let's read this conversation. So this comes in Srimad Bhagavatam, first canto, 13th chapter, 17th verse. He says, Evam griheshu saktanam pramattanam tad iha atyakramad avigyata kala parma dushtara. So he says, insurmountable, eternal time imperceptibly overcomes those who are too much attached to family affairs
and are always engrossed in their thought. So he's telling Dhritarashtra that you are always attached to your family members, always engrossed in their thought. And what is going to happen? This time, imperceptible, insurmountable time, this kala, parma, dushtara is going to overcome you. वो आपको खा जाएगा. और उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी टाइम की बताई विदुरा ने. आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस वर्ड. इट इज कॉल्ड अविज्ञा, अविज्ञात. तो ये क्वालिटी ऑफ टाइम, इस क्वालिटी को हम पढ़ेंगे. अविज्ञात क्या होता है, इम्परसेप्टेबल टाइम क्या होता है. इम्परसेप्टेबल होता है टाइम, ये इसकी फर्स्ट क्वालिटी है जो हम पढ़ेंगे. सो इसका क्या मतलब है अविज्ञात का या इम्परसेप्टेबल होने का. इसका मतलब ये है कि टाइम कैसे निकलता है पता नहीं चलता. हम सोचते हैं कि टाइम तो बहुत स्लो जा रहा है, बहुत धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन वो चला कैसे जाता है वो भी पता नहीं चलता. जैसे फॉर एग्जाम्पल इम्परसेप्टेबल को ऐसे समझ सकते हैं, इसकी एनालॉजी आती है अविज्ञात की एनालॉजी. जैसे आपके नाखून हैं, नाखून कैसे धीरे धीरे ग्रो होते हैं ना, पता नहीं चलता. एवरी डे इट इज ग्रोइंग अ लिटिल, बट पता नहीं चलता कितना ग्रो हुआ. या हेयर है, हेयर धीरे धीरे ग्रो होते रहते हैं, लेकिन आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितना ग्रो हुआ. मैं नहीं बोल सकती कि मेरा नाखून आज कितने मिलीमीटर ग्रो हुआ या मेरा हेयर कितने मिलीमीटर ग्रो हुआ, राइट. लेकिन एक दिन देखते हैं वो इतना बड़ा हो जाता है, उसको काटना पड़ता है. बाल इतने बड़े हो जाते हैं, उनको काटना पड़ता है. बच्चों का भी जैसे हम ऐसे देखते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं. हमको एक दिन कोई घर में आता है, बोलता है अच्छा आपका बच्चा तो इतना बड़ा हो गया, इतना लंबा हो गया, है ना. अभी तो ये छोटा सा था जब मैंने देखा था. तो कैसे हमारी हाइट धीरे धीरे बढ़ती है, कैसे हमारे नेल धीरे धीरे बढ़ते हैं, कैसे हमारे हेयर धीरे धीरे बढ़ते हैं. वी कैन नॉट क्वांटिफाई, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, इट इज नॉट परसीवेबल टू अस. सो समथिंग दैट इज नॉट परसीवेबल टू अस इज कॉल्ड अविज्ञात और इम्परसेप्टेबल. इसी तरीके से हमारी जो लाइफ है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है. हमको लग रहा है कि बहुत धीरे जा रही है, लेकिन एक्चुअली टाइम बहुत फास्ट जाता है. तो कब हम बूढ़े हो जाएंगे, कब हम कब प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, कब टाइम निकल जाएगा जो अच्छा टाइम था, जो वो पता नहीं चलेगा. तो इस तरीके से हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो वेस्ट हो जाएगी. एंड वी नो दैट ह्यूमन लाइफ इज सो रेयर टू गेट. एक वर्स आती है, शंकराचार्य बोलते हैं अपने भज गोविंदम सॉन्ग में. ही सेज अंगम गलितम पलितम मुंडम दशना विहीना जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदापि न मुंचत्यशा पिंडम. कि कब आपके अंग गल जाएंगे, मतलब आपके ऑर्गन्स विल स्टार्ट डिसफंक्शनिंग, पता नहीं चलेगा. कब आप पलितम मुंडम, कब आपके बाल चले जाएंगे सर से, पता नहीं चलेगा. आप सोचोगे मैं तो अभी जवान हूँ, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है कुछ करने को, लेकिन पता नहीं चलेगा कब टाइम चला जाएगा. कब आपके दांत चले जाएंगे. दशना विहीनम जातम तुंडम, माउथ में से, तुंडम मतलब माउथ, माउथ में से दांत चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा. वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्ध हो जाओगे और डंडा पकड़ना पड़ेगा. ये टाइम बहुत जल्दी आ जाएगा. लेकिन जब ये टाइम आता है तब व्यक्ति इतना अटैच हो चुका होता है कि वो अपना पिंड भी छोड़ना नहीं चाहता. तदापि न मुंचत्याशा पिंडम, कि वो अपने पिंड को छोड़ना नहीं चाहता, अपनी बॉडीली अटैचमेंट्स को छोड़ना नहीं चाहता. और ये दशा हो रखी है धृतराष्ट्र की कि वो इतना अटैच्ड है अपने फैमिली से, अपनी ऑपुलेंसेस से, अपने किंगडम से, कि वो वहीं हस्तिनापुर में ही बैठा हुआ है. जबकि उसने वॉर भी हार गया, वो तब भी वो वहीं बैठा हुआ है, वो छोड़ के नहीं जा रहा. तो उसको विदुर बोल रहे हैं कि समय अविज्ञात है, तुम्हारा ये समय निकल जाएगा और मृत्यु कब आ जाएगी पता नहीं चलेगा. ऑलरेडी वृद्ध हो चुके हो, बूढ़े हो चुके हो, तो यहाँ से निकलो. और अपनी जो बची कुची लाइफ है, सारी लाइफ तुमने वेस्ट कर दिया, धर्मा किया. अब जो लाइफ बची है उसको यूज करो, नहीं तो ह्यूमन लाइफ वेस्ट हो जाएगी. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो वेस्ट नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत दुर्लभ है, राइट. दुर्लभम मानुषम जन्मा, प्रहलाद महाराज सेज, राइट. इट इज टेम्परेरी एंड वी हैव टू मेक इट फुल ऑफ मीनिंग, वी हैव टू मेक इट वर्थवाइल. ही सेज तद अपि अध्रुवम अर्थदम, कि उसका अर्थ नहीं रहेगा कोई अगर हमने उसको वेस्ट कर दिया, उसको मीनिंगलेस हो जाएगी. इसलिए मेक इट वर्थवाइल, मेक इट मीनिंगफुल, यूज द टाइम. Otherwise, time is avigyat, it will fly away and you will not realize what will happen to you. So in this way, Vidura has come here with an agenda, with a goal, and he's giving his sadhu sangha, his satsanga, and that is what we need to do. We need to get association of devotees who will shake us, who will shake some sense into us. कि क्या कर रहे हो,
रोज ही टीवी देखते हो, रोज ही घूमने जाते हो, रोज ही बस खाने पीने में खाओ पियो ऐश करो में ही बिजी हो, कभी ये सब चला जाएगा, कभी बॉडी से इतनी अटैचमेंट हो जाएगी कि नेक्स्ट बॉडी फिर से लेनी पड़ेगी, पता नहीं चलेगा। तो इस इम्परसेप्टेबल टाइम को वेस्ट मत करो, साधु संगा करो। सत्संगा इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आवर टाइम। जैसे उस भजन में बोलते हैं ना, भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरण विंदरे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगा, तारो होए भव सिंधुरे। कि बहुत ही दुर्लभ मानव जन्म है, इसमें सत्संग कर लो तो तर जाओगे। And that is what Vidura is doing. Vidura has come to give his satsanga, his sadhu sanga to Dhritarashtra here. So this is this verse that I wanted to highlight. Difficult to understand where time will go. ऐसे एक सॉन्ग भी आता है ना कि टाइम कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, सम ऑफ यू हु नो बॉलीवुड सॉन्ग्स, किशोर कुमार का था शायद ये सॉन्ग। ये क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, अरे छोड़ो ये ना सोचो। So ऐसा नहीं करना है कि कब हुआ नहीं सोचो। No, think about what will happen, what we have to do, what should we do, how should we use our time. Don't just, like you guys are using your time attending Bhagavad Gita class every Sunday morning, but the time will pass very fast if we don't utilize it. You hear Bhagavad Gita and then apply it in your life. Gyan and Vigyan both are important. So in this way, the time is imperceptible. It will fly very fast. Let me just pause here. Let's hear other people's understanding. Did everyone get the first quality of time, imperceptible or a vigyat? Who wants to share anything that comes to mind about this? I'll stop my screen for a second. If nobody's sharing, then I have to pick somebody to share. So is everybody on the same page? We're talking about time, samay, waqt, right? Very, very important, right? So waqt jo hai, it is such a very powerful energy of the Lord. You cannot see it. You cannot even feel it. You cannot even touch it. Right? ऐसे बोलते हैं समय दिखाई नहीं देता, लेकिन वो दिखा बहुत कुछ देता है। तो वो बहुत कुछ दिखा देगा हमको, अगर हम उसको अपना फ्रेंड नहीं बनाएंगे। Just like mind को भी बोलते हैं ना, it can be the greatest enemy or the best of the friend. Actually time का भी यही है। टाइम को भी अगर हम यूज नहीं करेंगे तो it will become our greatest enemy. और कब हम दुविधाओं में पड़ जाएंगे और हमने कभी अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया, और कब मृत्यु आएगी और या वृद्ध अवस्था आएगी, या फिर कोई डिजीज आएगी, प्रॉब्लम आएगी, डाउन्स इन द लाइफ आएंगे, जो भी आएगा और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने वक्त को यूज नहीं किया। तो समय जो है वो बहुत ही अविज्ञात है, इम्परसेप्टेबल है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, और इतना समय नहीं है हमारे पास। ऐसे एक बोलते हैं समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको और समय दे सके, तो वो आपको और समय नहीं देगा। जितना समय है उसको यूज करना पड़ेगा। लाइफ बिल्कुल फिक्स्ड है हमारी, डिसाइडेड है, इतने घंटे, इतने दिन, इतने मिनट्स। तो उसका कुछ भरोसा नहीं कि कब आए। परीक्षित महाराज को देखिए कैसे उन्होंने अपने 7 दिन यूज किए, राइट? प्रभुपाद को देखिए उन्होंने अपना कैसे टाइम यूज करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर को देखिए कैसे अपना टाइम यूज करते थे। इफ आई पुट अप द टाइम टेबल ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर, you will be surprised how much he used to sleep, how much when he would wake up and do his chanting, and he was working, he was a magistrate, he was very valued professional actually. और कैसे फिर भी उन्होंने इतने सॉन्ग्स लिखे, इतनी बुक्स लिखी, कैसे किया ये सब, इतनी बड़ी लेगेसी छोड़ दी हमारे लिए, राइट? So we cannot achieve anything unless we use our time properly, right? So time is very difficult to catch. It is compared to like a bird that will keep flying and it will not come back. You cannot catch it, you cannot make it come back. It will not come back. Even a single minute, जैसे अभी 1 मिनट निकल गया, कोई कितने भी पैसे दे, डोनाल्ड ट्रम्प आके कितने भी पैसे दे, वो 1 मिनट वापस नहीं आ सकता। कोई कितने भी पैसे दे, उससे वो वापस 1 मिनट भी खरीद नहीं सकता। कोई भी 1 मिनट खरीद नहीं सकता। And that is how imperceptible time is. Now, if I want to ask you, what is the exact time right now? बिल्कुल exact time बताओ मुझे. Can anyone tell an exact time right now? अभी क्या टाइम हुआ है? Yes, Avni. No, Mataji. It is 9:47 and 4 seconds. Are you sure? Look again. Well, now it's 8 seconds. See?
So एक और भी ऐसा song है ना, आने वाला फल जाने वाला है, right? I can't sing very well, but there is a very beautiful song also of किशोर कुमार. वक्त पे इतने song क्यों लिखे हैं बॉलीवुड ने? जैसे प्रेम पे लिखे हैं, क्योंकि प्रेम, कृष्ण प्रेम जैसे सबसे important चीज है, right? ऐसे ही वक्त पे इतने song क्यों हैं? आने वाला पल जाने वाला है, like that, right? क्यों? क्योंकि वो आके चला भी गया. आपने बोला जब तक 5 से 8 सेकंड हो गया, तो इतनी जल्दी चले जाता है. It is so imperceptible. So nobody can even tell exact time. It will fly so fast, right? So that is the imperceptible, अविज्ञात nature of the time. इसलिए जो great souls होते हैं, they use the time very well. They live in the present. They make their, and that is how they make their future better. They don't lament or whine about the past. Past में जो हो गया वो चले गया. अब हमारे हाथ में present है, and they use their present time. Mahatmas, like Prabhupada and Bhaktivinoda Thakur that we quoted, and Parikshit Maharaj, and so many other great souls. They became great, even materialistic people. They become great because they do not waste any time and utilize every moment. Okay, if anybody wants to share about this, then please do. If not, we'll go to the next quality and next verse. Hare Krishna Mataji. Yes, Prabhuji, please share. No, yeah, thank you. I mean, I was going to give the same example. At the right time, you gave the same one. Nobody can say the perfect time here, because by the time we say, that's one thing about time. And the second thing, as you said, time use nahi karoge to fir lose ho jayega. That's what they're just saying by the English people. If you fail to plan, you plan to fail. Yes, So this Prabhuji. is how you use your time. Unless you plan, you can't use the time. Because when you get up and you don't know what you're going to do after getting up, waking up, or what you're going to do after this class, then you're going to again keep planning, and that's you're wasting the time. So that's another quality of time that it's taking away from you every microsecond. You don't even realize. Yes, Mataji, that's what I had. Haribol. Okay, let's go to the next slide. So this is the next verse. So first he told Dhritarashtra, you're so attached to your bodily attachments and family members that you're not able to see the imperceptible time that is creeping upon you. It is insurmountable, eternal time, and it will destroy you. The next thing he says, Vidurastad abhipretya dhritarashtram abhashata rajan nirgamyatam shigram Pashyedam bhayamagatam. So he says, Mahatma Vidur knew all this. He knew the nature of the time, right? Therefore, he addressed Dhritarashtra saying, my dear king, please get out of here immediately. Do not delay. Just see how fear has overtaken you. So he says, Rajan. Now, why is he calling him Rajan? Abhi Raja kaun hai is time pe? Please, everybody participate and answer quickly so we can finish in timely fashion. Again, we're wasting time by not answering, even if we know the answer, not answering, wasting time. धृतराष्ट्र ही तो राजा है. Yudhishthir Maharaj. Yudhishthir is Raja. Yudhishthir Maharaj, yes. So any shyness you feel that is not needed here, again, we are talking about time, because the shyness or that is just a sign of false ego. So we don't need to be shy in this class. Everybody can please share. I don't just want to hear from one or two people all the time. I want to hear from everybody. So yes, Yudhishthir Maharaj is the Raja, right? So because war has happened, Yudhishthir Maharaj has won, and Dhritarashtra is just staying under their shelter, under the shelter of Pandavas. ठीक है ना? वो राजा नहीं है. So राजा तो अभी युधिष्ठिर है. लेकिन फिर वो उनको राजा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो उनको sarcastically बोल रहे हैं कि तुम अपने आप को अभी भी राजा ही समझते हो. It's like a friend who's showing you the mirror, and that's what friends should do, right? They should show you the mirror. कि अपने आप को अभी भी राजा ही समझ के यहाँ राज दरबार में किंगडम में बैठे हुए हो, सारी ऑपुलेंसेस एंजॉय कर रहे हो, जबकि तुम हार चुके हो. अगर तुम हार गए, तुमने इतना अधर्म किया. अभी तो एक्चुअली वो बहुत सारे वर्सेस बोलते हैं जो मैंने थोड़ा हटा दिया. ही सेज कि तुमने उनकी मैरिड वाइफ को इंसल्ट किया, तुमने उनका घर जलाने की कोशिश की, तुमने उनको अनफेयरली अज्ञातवास और वनवास पे भेज दिया, फिर भी तुम उनके घर में ही बैठे हुए हो अपने आप को राजा बना के. प्लीज गेट आउट ऑफ हियर इमीडिएटली. देन ही सेज निर्गम्यताम शीघ्रम, जल्दी से निकलो यहाँ से बाहर. डू नॉट डिले. जस्ट सी हाउ फियर इज ओवरटेकन. उनको मिरर दिखा रहे हैं कि अपनी शक्ल देखो.
जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि आईना देखना चाहिए, तस्वीर नहीं देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तस्वीर जो हम लेते हैं, हम जैसे सेल्फी लेते हैं ना बड़ा अच्छा पोज कर करके, तो तस्वीर में फ्लॉज पता नहीं चलते, तस्वीर में प्रॉब्लम्स पता नहीं चलती, क्योंकि फोटो तो बेस्ट होती है ना। फोटो तो हमारी यंग, किसी की पासपोर्ट फोटो देखो बहुत पुराने टाइम की, बड़े यंग एंड स्मार्ट एंड हैंडसम दिखते हैं, फिट थे, हेल्दी थे। अब आईना देखो, लेकिन अब ऐसा नहीं दिखते तुम। अब आईना देखो, आईने में जो दिखता है वो सच है, जो वो पुरानी तस्वीर देख रहे हो वो सच नहीं है। तो इसलिए अपने आप को आईना दिखाते रहना चाहिए। लेकिन कई लोग करते हैं कि दूसरों को आईना दिखाते हैं। दूसरों को आईना सिर्फ अपने वेल विशर्स को दिखाना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को, अपनी अथॉरिटी पोजीशन में हो, अगर आप गुरु हो, अगर आप पेरेंट हो, अगर आप फ्रेंड हो, वेल विशर हो। हर किसी अरे गहरे को, हर किसी टॉम डिक हैरी को आईना दिखाने की जरूरत नहीं होती। ऐसे भी बोलते हैं कि जब आईना उठाओ तो पहले खुद को देखा करो, फिर दिखाया करो। इसलिए पहले आईना हर किसी को खुद देखना चाहिए, मैं कैसा कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरों को बोल रहा हूँ ये करूँ वो करो, लेकिन क्या मैं वो खुद कर रहा हूँ? So like that, we should always look at the mirror. We are not in position of Vidura, but Vidura can show the mirror to being a well-wisher and a very close, confident brother of Dhritarashtra. He's showing him the mirror. That look how fear has overtaken you. अपनी शक्ल देखो कैसे भयभीत हो। और this is the second quality of fear that I wanted to talk about. It's called bhayam. The second quality is called bhayam, meaning fear. तो सेकेंड क्वालिटी होती है कि जो आपको भयभीत कर देता है। समय, अगर हम समय को वेस्ट करें, अगर हम समय को यूज करें सिर्फ बॉडीली आइडेंटिफिकेशन इंक्रीज करने में, तो जब उनको छोड़ने का टाइम आता है तो फिर डर लगता है, ओल्ड एज का डर लगता है, डिजीज का डर लगता है, डेथ का डर लगता है, लॉस ऑफ लव्ड वंस का डर लगता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी का, लॉस ऑफ वेल्थ का, लॉस ऑफ स्टेटस का डर लगता है, लोनलीनेस का डर लगता है, इंटेलेक्ट चला जाएगा, डिमेंशिया आ जाएगा, इसका डर लगता है। सो टाइम विल ब्रिंग फियर, टाइम विल ब्रिंग इनसिक्योरिटीज, टाइम विल ब्रिंग एंजाइटीज, टाइम विल ब्रिंग भयम। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद धृतराष्ट्र, क्योंकि वो परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ अटैचमेंट, जो इतना अटैच्ड है। तो इसलिए टाइम जो है, जैसे कि आई वाज थिंकिंग ऑफ सर्टेन एग्जाम्पल्स, कितने भी बड़े बड़े लोग हुए दुनिया में, लेकिन इफ यू लुक एट देयर ultimately time will destroy and take away those attachments. For example, Muhammad Ali, एक तो आपको मैं दो चार शेयर करूंगी, but I wanted to share some from the world. Everybody knows Muhammad Ali. I hope everybody knows Muhammad Ali. Okay, so great boxer, right? Very very celebrated, right? लेकिन लास्ट में क्या हुआ? टाइम के इन्फ्लुएंस में क्या होता है? चार चीजें होती हैं, राइट? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। उसको क्या हुआ? व्याधि। उसको कौन सी डिजीज हुई? उसको पार्किंसंस हुआ था। पार्किंसन में यू कैन नॉट फाइट, राइट? हिज मसल्स बिकम वीक, ही कैन barely walk, right? Bedridden, just being taken care of the family, right? And how fearful that situation is. If somebody is not spiritually elevated, how fearful that situation is, ki somebody who was so fit and fine and beating up people and a boxer, so healthy, he's now bedridden. That is such a fearful situation. Now I'll show you a couple of other people from history from whom we should learn कि इतनी ज़्यादा bodily attachments and strong bodily identification नहीं होनी चाहिए, and we should use time to take away those things. Anybody knows who this is? Who knows? Kids will know, I'm sure. This is Margaret Thatcher. Margaret Thatcher was the Prime Minister of England, right? And बहुत इन्फ्लुएंशियल, राइट? बहुत अमेजिंग वंडरफुल स्पीकर, कि जब वो बोलती थी तो सब सुनते थे, राइट? जो उसने रिफॉर्म्स किए, जो वो चीजें करती थी, राइट? एवरीथिंग, क्वीन यूज्ड टू हियर हर, राइट? सब कुछ उसके उसमें होता था। शी वाज लाइक अ बिग सेलिब्रिटी, राइट? और फिर क्या हुआ? आफ्टर हर हस्बैंड passed, आफ्टर मेनी years of separation, loneliness and old age, right? She became very very depressed, she became dysfunctional, right? बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल मतलब कि लास्ट जो उसके फ्यू इयर्स थे, दे वर वेरी वेरी हॉरेंडस, कि ऐसी गति नहीं होनी चाहिए किसी की। सो इतना कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का कैसे, मतलब time can take away all those things, time can snatch it away. This is what brings fear, this is what brings anxiety to people. ठीक है ना? Now let me show you another person. I'm sure this people will know, at least the older people. Who is this? Meena Kumari. Meena Kumari.
मीना कुमारी कितनी बड़ी एक्ट्रेस थी. नाना प्रभु जी will know, right? Mom will know, my mom will know, and Nirvi's mom, right? कितनी बड़ी सेलिब्रिटी थी. इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी कि उसका एक इंसिडेंस ऐसे आता है कि मतलब उसकी मूवी रिलीज होती थी तो हजारों लोग जाते थे देखने, राइट? हजारों लोग, है ना. एक इंसिडेंस ऐसे आता है कि एक बार वो उसकी जो मूवी वाली वैन थी वो एक जंगल में से जा रही थी और खराब हो गई. और वो जो जंगल था वहां पे डाकू थे बहुत सारे, चंबल की घाटी के डाकू थे. तो वो जो मुझे डाकू का नाम था अमृतलाल चंबल. He entered into the van of मीना कुमारी with a knife. और सब डर गए. मीना कुमारी का एक्स हस्बैंड भी था, हाँ, उसकी भी शादी भी बहुत हुई थी. तो वो सब डर गए कि ये क्या करेगा, ये मार तो नहीं देगा हमारी इतनी बड़ी फेमस एक्ट्रेस को. चाकू लेके घुस गया. हाँ, लेकिन वो इतनी फेमस थी कि उसने क्या किया, चाकू मीना कुमारी के हाथ में दे दिया और बोला ऑटोग्राफ प्लीज. she was so amazing, so beautiful, so wonderful, right? इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, है ना. लेकिन उसको भी कितनी प्रॉब्लम्स थी. उसने क्या दारू एंड सिगरेट एंड इतना ज्यादा अल्कोहलिक बन गई. वो इतनी बड़ी अल्कोहलिक कि उसको लिवर खराब हो गया, पूरा सिरोसिस हो गया, राइट? लिवर खराब होने से शी डाइड. लाइक maybe somebody else knows this, but very shortly after Pakiza was released, very shortly, could not even enjoy the success of that movie, right? So how the time will degrade you, unless you use it well, unless you realize, unless you have this spiritual fundamental practices, no matter what you become, whether you become a celebrity star like Meena Kumari, or whether you become a big prime minister of a country like England, whether you become a boxer like Muhammad Ali, whether you become like Napoleon जो फ्रांस का वो बोलता था कि फ्रांस इज नेपोलियन एंड नेपोलियन इज फ्रांस. इतना बड़ा बनता था वो अपने आप को कि फ्रांस की आइडेंटिफिकेशन ही नेपोलियन से है. तो प्रभुपाद जब पेरिस में गए और लेक्चर दे रहे थे तो प्रभुपाद ने बोला कि नेपोलियन ऐसा बोलता था, लेकिन फ्रांस इज स्टिल हियर, वेयर इज नेपोलियन. ये पेरिस में बोला प्रभुपाद ने फ्रेंच लोगों के सामने कि फ्रांस तो अभी भी यही है, वेयर इज नेपोलियन. क्यों? क्योंकि टाइम किसी को नहीं छोड़ता, राइट? टाइम सबको ले जाएगा, आप कितने भी बड़े हों, सबको ले जाएगा. ऐसे ही औरंगजेब का एग्जाम्पल आता है. औरंगजेब कितना बड़ा वो था, कॉन्करर. उसने हमारे कितने मंदिर तोड़ दिए वृंदावन में, सबको कॉन्कर करने में लगा हुआ था, वर्ल्ड कॉन्करर बनना चाहता था. एंड एट वन पॉइंट ही वाज लाइक द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, बट ही कुड नॉट डिफीट, Nana Prabhuji will know, he could not defeat the Marathas. He could not conquer Maharashtra. हाँ, कितने साल लगा रहा वो महाराष्ट्र को कॉन्कर नहीं कर पाया. एंड दैट उसमें उसने अपनी सारी ट्रेजरी लुटा दी. उसमें इस एक डिजायर के पीछे कि मुझे महाराष्ट्र को कॉन्कर करना है, उसमें अपनी सारे सेना खत्म हो गई. उसके सारे सोल्जर्स थे, लाखों सोल्जर्स खत्म हो गए, पूरी ट्रेजरी. उसकी वो रिचेस्ट मैन था, महाराष्ट्र को कॉन्कर करने के चक्कर में उसकी सारी ट्रेजरी खत्म हो गई. एंड जब वो मरा अल्टीमेटली बिल्कुल अलोन, बिल्कुल ओल्ड एज में डिजीज्ड एंड विद हिज सन बाय हिज साइड, एंड ही सेड कि एंड ही वाज सो रिपेंटेंट कि मैंने क्या किया अपनी जिंदगी के साथ. इस तरीके से ह्यूमन लाइफ वेस्ट हो जाएगी अगर हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे. सो वी हैव टू रिमेंबर दैट टाइम विल ब्रिंग फियर, इट विल ब्रिंग separation from various things, from our bodily identifications, whatever stardom and kingdoms and whatever we have, it will take it away all. I'll present one. So this is Bhayam. I wanted to present one more. I think I don't have that yet here. So it invokes fear. And in Bhagavad Gita, Krishna says that I am time, right? He says, this is the famous verse, Kalo Asmi. He says, Supreme Personality of Godhead says, time I am, the great destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all people. With the exception of you, the Pandavas, all the soldiers here on both sides will be slain. कि मैं सबको लेने आया हूँ, मैं डिस्ट्रॉयर हूँ सारे वर्ल्ड्स का, सभी लोगों का, लेकिन पांडवों तुम्हारे बिना मैं सबको खत्म कर दूंगा. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक डिवोटी हो, अगर आप स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो, अगर आपने टाइम की शरण ली है, कृष्णा की शरण ली है, टाइम को ऑनर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, यूज करते हो, तो फिर आपको टाइम डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, फिर आपको टाइम लेके जाएगा अपने साथ, राइट? फिर टाइम या भगवान आपको अपने साथ लेके जाएंगे. लेकिन अगर आप उसको वेस्ट करते हो, अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करते,
अगर आप सिर्फ बॉडी की आइडेंटिफिकेशन में ही लगे हो तो टाइम आपको डिस्ट्रॉय कर देगा. आई हैव कम हियर टू डिस्ट्रॉय ऑल पीपल. हम लोग तो इतने बड़े भी नहीं हैं जितने ये लोग जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाए, लेकिन ये लोग भी कभी वही हुआ, राइट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि. तो हमारा भी वही है अल्टीमेट एंड. इफ we are not a devotee of the Lord, if we are not a surrendered soul, if we are not taking shelter of Krishna or shelter of time. Who knows this person? उनका नाम नीचे लिखा हुआ है, so I made that mistake, but yes, Andre Agassi, right? So let's read this. I want somebody to read this. I'm going to pull this up. This was an eye-opener for me. I cannot believe this, what he has written. This is his autobiography, and let's read the first. This is from the first page, and he calls it the end. Okay. Now I want somebody to read this till here. I open my eyes. Say, कोई पढ़ सकता? दिख नहीं रहा है? नहीं, आपका लिंक खोल रहे होंगे तो नहीं दिख रहा है. Okay, यहाँ से ये बुक है आंद्रे अगासी की, उसका नाम है ओपन, और ये उसकी ऑटोबायोग्राफी का फर्स्ट पेज है जो शुरू होता है विद द एंड. यहाँ से शुरू करके कोई पढ़ सकता है यहाँ तक? Mataji, I can read. Yes, Mataji, please go ahead. I open my eyes and I don't know where I am or who I am. Not at all unusual. I have spent half my life not knowing. Still, this feels different. This confusion is more frightening, more total. I look up. I'm lying on the floor beside the bed. I remember now. I moved from the bed to the floor in the middle of the night. I do that most nights. Better for my back. Too many hours on a soft mattress causes agony. I count to 3, then start the long, difficult process of standing. With a cough or groan, I roll onto my side, then curl into the fetal position, then flip over onto my stomach. Now I wait and wait for the blood to start pumping. I'm a young man, relatively speaking, 36, but I wake up as if 96. After 3 decades of sprinting, stopping on a dime, jumping high and landing hard, my body no longer feels like my body, especially in the morning. Consequently, my mind doesn't feel like my mind. Upon opening my eyes, I'm a stranger to myself. And while again this isn't new in the morning, it is more pronounced. I run quickly through the basic facts. My name is Andre Agassi. My wife's name is Stephanie Graf. We have 2 children, a son and a daughter, 5 and 3. We live in Las Vegas, Nevada, but currently reside in a suite at the Four Seasons Hotel in New York City because I'm playing in the 2006 US Open. My last US Open, in fact, my last tournament ever. I play tennis for a living, even though I hate tennis, hate it with a dark and a secret passion, and always have. At this last piece of identity falls into place, I slide down to my knees, and in a whisper, I say, please let this be over. Then I'm not ready for it to be over. Now from the next, So what do you think? This is the great Andre Agassi. Is it an eye-opener or no? I think he overused his body so much. I mean, just didn't care. Just he cared about his goal. Exactly. Yes, Mataji. Yes, just tennis, and tennis. Just as much as Meena Kumari got, so much engrossed in the celebrity status and stardom that, okay, when you come down, you're on a high. When you come down, you don't know how to deal with the down. So you drink to stay high all the time. So you keep drinking because you want to stay high all the time. क्योंकि बाहर जब मूवी रिलीज होती है तो आपको हाई मिलता है, जब सब लोग हाई बोलते हैं, प्रेज करते हैं तो हाई मिलता है, पर हाई ही रहना है सारा टाइम, तो कैसे करोगे? सो ड्रिंक करोगे. Ultimately that alcohol will consume you, right? And then disease and death, right? तो ऐसे ही होता है, right? So बहुत ज्यादा किसी चीज को इसी तरीके से लोग काम में लगे रहते हैं, right? बहुत ज्यादा काम में, बहुत ज्यादा फेम में, बहुत ज्यादा मनी मेकिंग में, बहुत ज्यादा चीजें, ये सब बॉडी की चीजें करने में. What is the point of that? You just ruined your body. You wasted a human life. You could have used it for so much, right? So that is why we are always told to balance.
not just material life all the time. We have to balance material and spiritual both, right? So we make best use of our body. This body is like a temple of the Lord, right? But it is so hard unless you have that spiritual understanding. It is so hard. It is so hard to deal with the downs of the life. So down में क्या करेगा व्यक्ति? He will take to drugs, he will take to alcohol, he will take to bad association, he will spend his money in bad association, whatnot, right? So because you don't know how to deal with the downs. So in this way, threefold miseries, 4 problems of life, very hard to deal with those unless you have the buffer, the spiritual understanding, the knowledge. And then let's do the next. I want to go a little faster now. So number 3, quality of the time. So then he says, let's read 2 verses actually. He says, Pratikriya na yaseha kutaschit karihi chit prabho sa esha bhagwan kala sarvesham na samagata. So then Vidura says to Dhritarashtra कि देखो तुम्हें कितना fear has overcome you, देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है. This frightful situation cannot be remedied by any person in the material world. My Lord, it is the supreme personality of Godhead as eternal time that has approached us all. कि स एशा भगवान काला, कि ये जो टाइम के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये टाइम कुछ और नहीं, भगवान खुद हैं. स एशा भगवान काला. इसलिए तुम इसको या दुनिया का कोई भी पर्सन, by any person in this material world cannot remedy this frightful situation. भय आएगा ही आएगा टाइम के साथ, इनसिक्योरिटीज एंजाइटीज आएंगी ही, और तुम इसको रोक नहीं पाओगे क्योंकि ये तो भगवान है. तुम भगवान को ओवरकम या सरमाउंट कर ही नहीं सकते, because it is the Bhagwan who has approached us all in his form as time. So this is the 3rd quality of time, that it is Bhagwan itself. Sa Esha Bhagwan Kala, that it is an energy of Bhagwan, right? Sarve Sham na Samagata, koi bhi nahi bach paega, sabhi isse बचेंगे. So कितने आए कितने गए लोग, जितने हमने अभी बातें देखी, लेकिन कोई भी इनसे इस टाइम की fearful situation से बच नहीं पाएगा, because it is Lord himself. And Krishna says that in Bhagavad Gita. This is from Bhagavad Gita 10.30. He says, among the Daitya demons I am devoted Prahlad, among subduers, look at the word, among subduers I am time. Subduer मतलब जो आपको subdue कर देगा, जो आपको जब time का influence होगा तो वो आपको overcome कर लेगा. आप उसको overcome नहीं कर पाओगे, वो आपको overcome कर लेगा, वो आपको subdue कर देगा. That is the quality of this time, that it is Bhagwan itself, right? And Kalosmi में भी, उसमें भी कृष्णा ने बोला था कि I am the great destroyer of the worlds. So time comes as a giant devouring factor. It devours, it eats up, it destroys everything. And if you remember, he said, with the exception of you, all will be slain. So काल के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता. It is a very devastating force, right? हमने इतने एग्जाम्पल लिया, औरंगजेब का, नेपोलियन का, बड़े बड़े ग्रीक एम्पायर, रोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, सबका एग्जाम्पल लिया, लेकिन कोई भी ओवरकम नहीं कर सकता. Time is Bhagwan himself, so he will be the last person standing unless we are devotee. And we know that famous analogy कि अगर आप devotee हो तो time आपको या काल आपको जब मृत्यु की तरह आता है तो वो आपको कैसा लगता है? It's like a little kitten in the jaws of its mother cat, है ना? लेकिन अगर आप devotee नहीं हो, ऐसे ordinary person हो, तो फिर आप time के सामने एक mouse की तरह, एक rat की तरह, and the jaws of the cat will be very ferocious, very, very frightening for you, very anxiety provoking for you. But if you are a devotee, it's like a kitten in the mouth of the cat. So kitten or mouse की analogy आती है, very famous, that we have heard before. Yes, Mataji, you want to share something? Yes, Mataji, basically a question type. तो डिवोटी को ऐसे लगता है क्योंकि उनको समझ में आ जाता है, राइट, कि मतलब जो बॉडीली कंसेप्ट है वो उनको समझ में आ जाता है और उनको पता होता है कि बॉडी से डिटैच्ड होना ही इज गोइंग टू ओपन द गेट फॉर द पाथ टुवर्ड्स लॉर्ड, राइट. तो इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट, कि मृत्यु आए या समय खत्म हो गया, क्योंकि उनको समझ में आ गया होता है, राइट. ऑर्डिनरी पर्सन जो होते हैं उनको ये लाइक ज्ञान नहीं है, सो दैट इज द ओनली डिफरेंस, राइट. Yes, Mataji, and remember that Krishna is looking out for the devotee.
and devotee has used his time by engaging in devotional services in various 9 limbs of devotional services. तो उन्होंने कभी time waste नहीं किया. तो जब अंत समय आएगा तो एक्चुअली अंतकाले च माम एषा, राइट? तो वो तो भगवान के पास जा रहे हैं, तो उसको किसी बात का डर ही नहीं, वो तो अपने घर जा रहा है वापस. लेकिन डर तो उसको है जो अपने घर नहीं जा रहा, जो यमराज के पास जाके फिर कुछ भुगतेगा, कुछ भोगेगा और फिर वापस किसी योनि में जाएगा, राइट? किसी मे बी लोअर सिचुएशन में, हेलिश सिचुएशन में, लोअर स्पीशीज, लोअर प्लैनेट में जाएगा. डर तो उसको है, इसलिए मृत्यु से डर उनको लगता है, राइट? क्योंकि उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया, सारी जिंदगी वेस्ट कर दी. लेकिन अगर आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, अगर आपने यूज किया, अपने भगवान की सेवा की, आपने ये ज्ञान समझ लिया, जैसे आपने बोला ज्ञान समझ आ गया, तो आपने टाइम वेस्ट करोगे ही नहीं आप, क्योंकि आपको ये पता है. तो आप मंडेन चीजों में टाइम वेस्ट करोगे ही नहीं, आपको वैल्यू पता है उसकी. और फिर आपका अंतगति भी अच्छी होगी क्योंकि आपने ये सब किया. And then remember that Krishna is time himself. So for devotees, that is why they are able to do many things, because how is Prabhupada able to do so much? That is why I keep giving example of Prabhupada. Even so many other of our Guru Varga, if you look at them, how are they able to do so many yatras? They go around the world so many times. They do so much preaching, and some of them also have their professional life. Some of them are grahasthas also. How are they able to manage that? Because Krishna expands time for them, right? ऐसा मेरे जो प्रोग्राम डायरेक्टर थे पुराने मेरे रेजिडेंसी के, जहां से मैंने OB-GYN की थी शिकागो में, वो बोलते थे कि जब कोई काम देना हो ना किसी को करने को, तो उस व्यक्ति को दो जो सबसे बिजी है, सबसे बिजी व्यक्ति को दो. क्यों ऐसा है? क्यों खाली व्यक्ति को देना चाहिए काम, तो बिजी को क्यों देना चाहिए काम? बिजी व्यक्ति को काम इसलिए देना चाहिए क्योंकि उसको टाइम की वैल्यू पता है. वो बिजी इसलिए है क्योंकि वो अपना सारा टाइम यूज करता है प्रॉपरली. तो जो तुमने उसको काम दिया वो उसको फिट करके यूज करते उसको कर देगा. लेकिन जो खाली लोग हैं वो टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए वो तुम्हारा काम भी नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए जो सबसे बिजिएस्ट पर्सन है उसको काम देना चाहिए, क्योंकि उसको टाइम की वैल्यू पता है. वो पूरा घंटे का यूज, मिनट्स का, अच्छे से कितना सोना है, कितनी देर, इतने से इतने बजे तक खाना है, इतने से इतने बजे तक ऑर्गेनाइज करके रखता है लाइफ को. पूरी उसकी टू डू लिस्ट है, उसका प्लानिंग है, राइट? तो वो आपके काम को भी फिट करके कर देगा. इसलिए जब आप लीडर हो तो काम ऐसे व्यक्ति को दो जो सबसे बिजी हो. Thank you, Mataji. Yes, but your understanding is 100% correct. Then Krishna also says later. So देखो कितनी सारी verses भगवत गीता के और भागवतम where Krishna is talking that I am time himself. Then he says in this verse also 10.33, aham evakshaya kalo, कि मैं ही काल हूँ. I am also inexhaustible time. Now you understand why महाभारत के शुरू में वो बोलते थे कि मैं समय हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है कृष्णा की. अहम एवक्षया कालो, कि मैं काल हूँ. So this is the third quality that Krishna is, that time is energy of the Lord. It is Bhagwan. Then let's take the next quality. We'll read couple more verses from Vidura to Dhritarashtra. Then he says, whoever is under the influence of supreme Kal or eternal time must surrender his most dear life, and what to speak of other things such as wealth, honor, children, land and home. कि आपको अपना जीवन भी सरेंडर करना पड़ेगा. जो भी टाइम के इन्फ्लुएंस में है उसको अपना सब कुछ देना पड़ेगा टाइम को. फिर वो बोलते हैं, and we'll read this purport also. Let me go back very quick. The next verse में वो बोलते हैं, सब लोग चले जाएंगे. Your father, brother, well-wishers, sons are all dead and passed away. You yourself have expended the major portion of your life. Your body is now overtaken by invalidity, and you are living in the home of another. कि सब कुछ तुम्हारा भी जा चुका है, काल सब कुछ ले जाता है, तुम्हारा भी सब कुछ ले जा चुका है. तुम्हारे सन्स, तुम्हारा फादर, तुम्हारे ब्रदर, तुम्हारे वेल विशर्स सब कुछ जा चुके हैं. तुम्हारी लाइफ भी सब मोस्टली जा चुकी है. बॉडी भी जाने वाली है, बस इनवैलिड हो चुकी है बॉडी. और तुम दूसरे के घर में रह रहे हो, तुम्हारा घर भी नहीं रहा, वो भी जा चुका है. तो दिस इज द फोर्थ क्वालिटी ऑफ टाइम, दैट टाइम snatches away everything with no respect for anybody, with utter contempt and disdain. Time will take away everything. It सब कुछ हर लेता है. So now let's read this purport of Prabhupada. He says for this verse, जिसमें विदुरा बोलते हैं कि टाइम सब कुछ ले जाता है. तो ये purport कौन पढ़ेगा? I put the whole purport here to read. Yes, Mataji. Yes. Hare Krishna. A great Indian scientist busy in the plan making business
was suddenly called by invincible eternal time while going to attend a very important meeting of the Planning Commission. And he had to surrender his life, wife, children, house, land, wealth, etc. During the political upsurge in India and its division into Pakistan and Hindustan, so many rich and influential Indians had to surrender life, property, and honor due to the influence of time. And there are hundreds and thousands of examples like that all over the world, all over the universe, which are all effects of the influence of time. Therefore, the conclusion is that there is no powerful living being within the universe who can overcome the influence of time. Many poets have written verses lamenting the influence of time. Many devastations have taken place over the universe due to the influence of time, and no one could check them by any means. Even in our daily life, so many things come and go in which we have no hand, but we have to suffer or tolerate them without remedial measure. That is the result of time. Hare Krishna. Hare Krishna. So I like this purport a lot. How everything has to be surrendered under the influence of time. And so many people have lamented this. Poets have written verses lamenting the influence of time. Many devastations have taken place under the influence of time. And no matter whoever it is, you will have to surrender to the influence of the time. So time snatches away everything. That is it is the greatest subduer. It is the greatest हरता, जो सब कुछ हर लेगा आपका. तो इसलिए कभी ये मत सोचे कि ये मेरा है, क्योंकि time will take away everything. So this is, and then let's come to the last quality of time, 1.13.22. What does Vidura say further? Very, very heavy shlokas coming from Vidura. Amazing that Vidura is saying these things. Dekho. He says, you have been blind from your very birth. Andha pureva badiro. Ki अंधे तो तुम पैदा ही हुए थे. Recently you have become hard of hearing. अब hearing भी जाने लगी है. Your memory is shortened. Memory भी कम हो रही है. Your intelligence is disturbed. Intelligence भी कम हो रही है. देखो मंदाग्नि की जो आपकी intelligence, मंदाग्नि sorry liver action, ये मंद प्रज्ञा की आपकी जो प्रज्ञा है, आपकी जो intelligence है वो मंद हो गई है, कम हो गई है. साराग कपम उद्वम, कफम उद्वम, आपके टीथ लूज हो गए हैं, आपका लिवर डिफेक्टिव हो गया है और आप म्यूकस कॉफ अप कर रहे हो. तो उसको उसका सिचुएशन बता रहा है कि देखो क्या सिचुएशन है. अंधे तो पैदा हुए ही थे, हियरिंग भी चली गई है, इंटेलिजेंस भी जा रही है, मेमोरी भी जा रही है, टीथ भी जाने वाले हैं, लिवर डिफेक्टिव हो चुका है, कॉफिंग हो रही है इतनी ज्यादा. एंड देन ही सेज, didn't I put that shloka? Yeah. And then he says, next thing he says, alas. So this is the next verse after that. He says, how powerful are the hopes of a living being to continue his life. Verily, you are living just like a household dog. Griha palavat, kutte ki tarah reh rahe ho, eating remnants of food given by Bhima. So usko provoke kar rahe hain Vidura. Vidura is provoking Dhritarashtra. He is provoking Dhritarashtra. भीमा का नाम इसलिए लिया, बाकी पांडवस का नाम नहीं लिया. भीमा का नाम लिया क्योंकि भीमा ने 100 पुत्रों को मारा था ना. कि भीमा के घर में रह रहे हो गृह पालवत. गृह पालवत मतलब जो पेट डॉग होता है, पेट डॉग की तरह रह रहे हो भीमा के पास. कितनी इच्छा है जीने की तुमको. How powerful are the hopes of living being to continue his life. कि हम इतने ज्यादा अटैच्ड होते हैं बॉडी के साथ कि हम छोड़ ही नहीं सकते बॉडी को और बॉडी की अटैचमेंट्स को. इतनी इच्छा है तुमको जीते रहने की कि तुम कुत्ते की तरह भी जीने को तैयार हो भीम के घर में. So this is the last quality of time. That time, everybody, every single person wants to keep living. It is so imperceptible. It is so difficult to understand. And Yudhishthir Maharaj ने भी यही question पूछा था यक्ष से कि मुझे ये समझ नहीं आता, सबको पता है कि मृत्यु आनी है लेकिन हर किसी को फिर भी जीते ही रहना है. So that is the situation of everybody, that time embraces, death embraces everyone, but everybody wants to keep living.
And this is just a picture to show that how we will keep, time will keep passing, will grow from like a fetus to a grown man and an old man. And finally, time will come as this ferocious looking death. And you will keep accepting different species unless we are very careful of how we are utilizing that time. So with the effect of time, this is what happens. What happens? This is from Prabhupada's purport, that the body is born, it will go through these stages. It will born, it will take birth, then it will develop, it will stay, it will create other bodies, dwindle, and then vanish. These 6 changes take place in the body, in every person's body. It embraces every single person. Nobody can escape. Lekin foolish men want to make a permanent settlement of the perishable body, and think that all these things will give them protection. So we amass wealth and amass influential people around us, or amass family members around us, thinking that these people will give us protection. These things, these agents, these associates will give us protection. But no matter what we arrange, nobody can give protection. It embraces all. So these are the foolish ideas. And with such foolish ideas, they become overtaken by such temporary engagements and forget altogether that they must give up this temporary body and take a new one and arrange. Then they'll get into another form of society, another form of love, another form of friendship. And again, they will perish. In this way, the circle will keep going. So they forget their permanent identity and become foolishly active for impermanent occupations. So ये सब जितने भी लोगों का हमने example लिया, they were becoming foolishly active for impermanent occupations, basically forgetting altogether their prime duty. जैसे माता जी ने बोला ना, उसने अपनी बॉडी खराब कर ली, तो ये क्या हुआ? Foolishly becoming active for an impermanent occupation, forgetting altogether the prime duty. So as long as we remember our prime duty and not get foolishly overtaken by the bodily identification, think that bodily identification is the permanent situation, then we are okay, right? So विदुरा जैसे sages फिर आते हैं ऐसे लोगों को बचाने के लिए, जैसे प्रभुपाद आए हमको बचाने के लिए, ऐसे saints और sages like Vidura approach such foolish men to awaken them, उनको shake करने, उनको आईना दिखाने, उनको mirror दिखाने कि देखो ये तस्वीर देखना बंद करो, mirror देखो, ये तुम्हारी सच्चाई है, तुम पे तुम्हारी बॉडी को देखो क्या हो गया है, देखो कितनी खतरनाक भयंकर सिचुएशन आ गई है. ऐसे sages आते हैं. लेकिन जो foolish लोग हैं, they refuse to hear the words of such sadhus and saints. तो जैसे विदुरा आए दिखाने धृतराष्ट्र को, ऐसे हमारी लाइफ में भी डिवोटीज आते हैं. विदुरा वाज नॉट अ साधु टू सैटिस्फाई द इल गॉटन सेंटिमेंट्स ऑफ धृतराष्ट्र. वो ये नहीं बोलने आए थे उनको अपीज करने नहीं आए थे, प्लीज करने नहीं आए थे कि कोई बात नहीं, कर सकते हो, रह सकते हो, क्या फर्क पड़ता है. नहीं, he had not come for this purpose. He was pointing out the real situation of life and how one can save oneself from such catastrophes. कि हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, ये बताने आए थे विदुरा. So this is that verse. So this is the situation that it embraces everyone as death. Okay, so these are the 5 qualities. I'll pause for a couple minutes and let's see what anybody wants to share. Anybody wants to share any thoughts? मैम बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा था. समय के ऊपर, समय का पहिया कैसे घूमता रहता है, इसका ये बहुत अच्छी तरह से ये इसमें समझ में आया. इसका एक एग्जांपल हमने जो देखा था ड्यूरिंग द 1971 वॉर, इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर. She fought the war on 2 fronts, वेस्टर्न फ्रंट पाकिस्तान और ईस्टर्न फ्रंट में पाकिस्तान ईस्ट में जो अभी बांग्लादेश है. She won the war and she was addressed as the Durga Devi in the parliament by none other than the Atal Bihari Vajpayee ji. So she was praised. But subsequently she imposed the emergency in India. And there, when I was posted in Allahabad Air Force Station, the Indira Gandhi arrived. She arrived with only one person, one escort, and to receive her only 2 persons in car they came. ऐसा भी समय था
कि इंदिरा गांधी का दर्शन होना तो बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन एक समय ऐसा था कि उसको रिसीव करने के लिए कोई नहीं था, इतनी भीड़ भी नहीं थी, केवल 2 आदमी थे। तो ये समय का पहिया बड़ा बलवान होता है, जो ऐसा घूम जाता है कि आदमी को क्या से क्या बना देता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हमने अपने अनुभव किया हुआ है टाइम का। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत Thank you, बढ़िया। Prabhuji. I'll share a couple more verses that Vidura said. Then further he said, despite your unwillingness to die, your desire to live even at the cost of honor and prestige, your miserly body will certainly dwindle and deteriorate like an old garment. He is certainly a first class man. फिर मैंने 1-2 श्लोका skip कर दिए। फिर वो उसको बोलते हैं अब कि जाग जाओ, बहुत हो गया, चलो यहाँ से। He is certainly a first class man who awakens and understands either by himself or from others the falsity and misery of this material world, and thus leaves home and depends fully on personality of Godhead residing within his heart. कि भगवान पे निर्भर होके रहो, डिपेंड करके रहो। ये समझो कि ये सब सिचुएशन कैसे फॉल्स है, कैसे मिजरी है इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अवेकन एंड अंडरस्टैंड एंड डिपेंड ऑन द लॉर्ड, then time will be your friend, right? Because you will be using it, you will be approaching, जैसे हमने वो kitten और mouse का example लिया था, you will not be a mouse anymore, you will be a kitten now, you will be protected by his mother, right? तो इस तरीके से otherwise we are just wasting our life। और जितना जल्दी ये बात समझ ले उतना अच्छा है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना इंग्लिश में, a stitch in time saves 9। what does that mean, a stitch in time saves 9? कि जब मान लो आपका कुर्ता फटा है, मान लो मेरा ये यहाँ पे फट जाता है थोड़ा सा, अगर मैं इसको अभी एक स्टिच लगा के जोड़ दूं, अभी ठीक कर दूं, इसको अभी मेंड कर दूं, तो वो और नहीं टूट फटेगा ना। लेकिन मैं सोचूं बाद में करूंगी, अभी नहीं, बाद में करूंगी, क्या होगा, वो जो फटा हुआ है वो बढ़ता जाएगा, राइट? वो बढ़ता जाएगा, वो इतना बढ़ जाएगा कि या तो वो सिलने लायक नहीं रहेगा, या फिर मुझे बहुत सारे स्टिचेस डालने पड़ेंगे उसको सीने के लिए, है ना? तो दैट इज व्हाट इट मीन्स, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। कि अभी मैं एक धागा लगा के उसको जोड़ सकती हूँ, तो अभी तक जो भी हो गया उसको छोड़िए, अब यहाँ से आगे चलते हैं। अभी भी हम मेंड कर सकते हैं सिचुएशन को, अभी भी हम रिपेयर कर सकते हैं, इस जो फटा है उसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर वेट करते रहे और प्रोक्रास्टिनेट करते रहे कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, आगे देखेंगे या फिर देखेंगे फिर कभी, तो क्या होगा, वो इतना ज्यादा उधड़ जाएगा कि वो सी नहीं पाएंगे हम, वो या फिर बहुत ज्यादा सीना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी से शुरू कर दीजिए, एंड वी विल बी the process of surrender is a full time occupation, it's not like कि वो एकदम से हो जाएगा। तो it needs a lot of time and attention, and it is demanding process. So let's get down to it, let's start chanting the names of the Lord. He is the one who can protect, he is the one who can maintain, he is the one who will create, he is the one who we should depend on. Let's start depending on him. Let's follow this various processes of devotional service that Prabhupada has told us, right? क्योंकि ये जो वक्त निकल जाएगा ये फिर वापस नहीं आएगा, just like we established कि वो निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता। तो वक्त तो मिलता है, राइट? सबको मिलता है, हम मेरे पास भी 24 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे, सबको मिलता है। ऐसा बोलते हैं वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी फिर नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो फिर नहीं आएगा, जब फिर रिग्रेट होगा, जब लास्ट का टाइम आएगा तो रिग्रेट होगा, और वक्त को फिर नहीं बदल पाएंगे। वक्त को चेंज नहीं कर सकते, टाइम को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, पर हम अभी प्रेजेंट में एक्ट करके फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। सो टाइम इज लाइक मनी, इन्वेस्ट इट वेरी वाइजली। स्पेंड नहीं करना, उसको इन्वेस्ट करना है। जैसे मनी को हम स्पेंड भी वाइजली करते हैं, इन्वेस्ट भी। सो स्पेंड इट वाइजली, इन्वेस्ट इट वाइजली। This I found some verses from Bible also. Our days on the earth are as a shadow, for we are only of yesterday and know nothing. Like a flower, he comes forth and withers. He also flees like a shadow and does not remain. So that's all we are, like a shadow. Our days on earth are like a shadow. Then some Sanskrit verses also. Many Sanskrit verses are there. बुद्धिमान लोग काव्य शास्त्र का अध्ययन करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, जबकि मूर्ख लोग निद्रा, कलह और बुरी आदतों में अपना समय बिताते हैं. So wise people spend their time in studying poetry. Poetry means we can replace this with spiritual poetry, right? While foolish people spend their time in sleeplessness, discord and bad habits. तो कला कलेश करना, बुरी संगति रखना. बुरी संगति में आजकल एक एग्जांपल है सोशल मीडिया का, गैजेट्स का, फोन का, टीवी का. So that is बुरी संगति, bad habits, right? So बुरी संगति रखना, ये सब
कौन करते हैं? Foolish people spend their time in all this. And another verse, फिर से प्रभात, फिर से रात्रि, फिर से चंद्र और फिर से सूरज का उगना, काल का क्या जाता है? कुछ नहीं, ये तो यौवन जाता है, पर लोग कहाँ समझते हैं। तो यूथ चला जाएगा, काल का, टाइम का कुछ नहीं जाएगा, टाइम तो चलता रहेगा, लेकिन जाएगा किसका? आपका। आपका यूथ चला जाएगा, आपका, आपकी एनर्जी चली जाएगी, आपकी बॉडी, आपके रिसोर्सेज, आपकी जो सपोर्ट सिस्टम चला जाएगा। तो ये उसको यूज कीजिए। अभी सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कम्युनिटी है, इतनी अच्छी डिवोटी एसोसिएशन है, इतने रिसोर्सेज हैं, कमा सकते हैं, प्रसाद बना सकते हैं, हेल्थ है, चैंटिंग कर सकते हैं, राइट? उसको यूज करके वो सब कीजिए। लेकिन यहाँ पे लिखा है, पर ये लोग ये कहाँ समझते हैं? लोका कथितम न बुध्यते. So I'm just pulling up something different from other places also. And this is my favorite verse that I always like to refer back to. This is the conversation between Yudhishthir Maharaj and Yaksha that I was talking about. कि जब महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, नहीं, यक्षा ने पूछा महाराज युधिष्ठिर से कि इस दुनिया की सबसे वंडरफुल बात क्या है, सबसे अचंभे वाली बात क्या है? तो महाराज युधिष्ठिर ने बोला, आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति हायमालयम् शेषास्थावरम् इच्छन्ति किम आश्चर्यम् अथा परम्. Hundreds and thousands of living entities meet death at every moment, but a foolish living being nonetheless thinks himself deathless and does not prepare for death. This is the most wonderful thing in this world. This is Yudhishthir Maharaj saying in Mahabharat, वान पर्व. तो बोलते हैं कि हर मोमेंट पे इतने लोग मर रहे हैं और हम देखते हैं, लेकिन फिर भी हर किसी को लगता है कि मैं नहीं मरूंगा, और इसीलिए वो कभी प्रिपेयर नहीं करता, वो चलते रहता है ऐसे. This is one of my very favorite verses I really like. So let's stop making excuses. Let's use our time wisely. Let's honor the time. It is very powerful, as you saw. Avoid bad association of bad people, or bad association can be bad people. It can be bad. It can be gadgets. It can be internet. It can be phone. It can be social media. It can be bad habits, right? Any of those things can be bad. So organize your life. Divide time wisely. This I found somewhere where they say use the correct language. जैसे हम बोलते हैं where has the time gone, इसकी बजाय बोलो how did I use my time. या कई लोग बोलते हैं it was such a waste of time, तो बोलो I wasted time, so much time. Use the correct language. Take ownership of how you are wasting the time. The time just flew past. या बोलो I didn't keep track of my time. In this way there are so many things people say, where has the day gone. You have to say how did I waste my day. It is a way of killing time. No, you're not going to kill time. लोग बोलते हैं I'm killing time. Time is gonna kill you. You're not gonna kill time. लोग बोलते हैं टाइम पास कर रहा हूँ. आप टाइम को क्या पास करोगे? टाइम आपको पास करके निकल जाएगा. So this we have to understand. So use correct language. Take ownership, accountability of how we are wasting our time. And then this is why we should learn time management, so we can manage our life. We can work smart, not hard. We can accomplish all our goals. When we accomplish our goals, you feel satisfied, you feel fulfillment, right? You feel happiness. So happiness comes from doing things. To do things, get them done, and you feel happy. Effectively utilize your time and others' time also. Don't waste other people's time also, and not your time either. Like that. And this is something very, very famous that all the kids know, right? Everybody, all the kids know this. This is Eisenhower's matrix, or priority matrix, priority planner, right? What is urgent and important, what is quadrant 2, which is not urgent but important, quadrant 3, which is not urgent, not important and urgent, and this is neither important nor urgent. Who will tell me which quadrant we should stay in? One of the kids, because you have studied this very nicely. Yes, Abni. Number 2. Number 2. Can you explain why? Because it's important and not urgent, so that means that You don't it's stress something, out. yeah, you don't stress out and you don't have to worry about doing it, and it just is better. It's the best out of all of them. And the quality of work is good. Very bold. Yes, so we should stay. This is the quadrant which is called not urgent but important. So do things when they're not urgent, so that they do not become urgent, right? This is the quadrant of Satoguna. This is in mode of goodness. This quadrant is what mode? It is urgent and important. This is mode of passion, right? This is mode of passion. What is this quadrant? Where it is not important but urgent.
like interruptions, phone calls, unexpected visitors. All these things this is mode of passion and ignorance. This is wasteful quadrant. So this is mode of ignorance, right? So this should be completely deleted. Actually, both of these should be deleted. This sometimes is not in our hands to delete. So that is why we should stay in this quadrant so that we can make time for this sometimes. This is the quadrant where most of the planning, preparation, decisions happen. This is the quality time. This is called quadrant of quality. This is wasteful, so eliminate it. This is deception. You think you're doing something important, but it is actually not important. So this also we should try to eliminate as much as possible. And this one is the mode of passion, where there's a lot of activity urgently happening. But sometimes there are certain things that do fall in this urgent and important, which are out of our hands. But agar aap satoguna mein rehte ho, so you should be in quadrant 2. So things should not be very urgent, and and all the important things should be done in a non-urgent fashion with a calm, quiet mind. Some key points I assembled just to how to not waste our time. Increase the mode of goodness. अगर आपको quadrant 2 में रहना है, तो आपको सतोगुना बढ़ाना होगा. सतोगुना कैसे बढ़ता है? By good association, by spiritual practices. And what does satoguna do? It improves your focus, it improves your wisdom, it improves your calmness of the mind, tranquility. You're more introspective, you're more sober, your thinking is deep, you're more organized, right? That is why we should stay in mode of goodness so that we won't waste time. Set goals, make things, make lists, get things done, right? So आपको जो calendar मिला है जिन लोगों को, please start writing your to-do list on it and plan your day. Get things done and set goals and achieve the goals, and that gives you satisfaction and fulfillment. Avoid bad association, we talked about this. Treat time like money, we also talked about this. हर किसी का मनी के हिसाब से टाइम होना चाहिए. जैसे मुझे टाइम के हिसाब से पैसे मिलते हैं कि अगर राइट अगर हम 1 घंटा काम करते हैं, मेरी नेटवर्थ क्या है, मेरी वर्थ क्या है, मेरे 1 घंटे में मुझे $200 मिलेंगे या मुझे $10 मिलेंगे, राइट? सो ट्रीट टाइम लाइक मनी. हर मोमेंट को कैसे स्पेंड करना है. इन्वेस्ट इट वाइजली. इन्वेस्ट दिस टाइम in people, invest in relationships, invest in good habits, building good habits, invest in spirituality, invest in creativity, invest in social causes, right? That is how you should invest your money, your time and money. Honor it like Lord, because you've already established how it is Lord, right? It will take away everything, it will snatch, it will embrace you like death, and it will embrace everyone. So increase your spiritual quotient and put yourself in the hands of the Lord. Decrease the bodily identifications over the time. So treat it with great respect, just like you will treat Lord. That is all I have to share. I hope everybody has a very happy Krishna conscious year that you use very wisely. Remember, life is short and time is running very fast. You don't get any replays, any rewinds, and so we should use it wisely. Please, if there are any thoughts or questions or anything, we can